Hi guys and welcome to Yogi Talks. I'm Yogendra and मैं एक पायलट नहीं हूँ लेकिन मैं एक एविएशन एंथुसियास्ट हूँ और मैंने 2020 में आई क्लियर द स्पाइस जेट कैडेट प्रोग्राम. आई डिडंट जॉइन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. कोविड था, एक्सपेंस था एंड ऑफ कोर्स जो स्पाइस जेट की फाइनेंशियल हालत थी. टुडेज टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा अराउंड साइकोमेट्रिक टेस्टिंग. वो कैसे आपको क्लियर करना है बिकॉज दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ एनी कैडेट प्रोग्राम टेस्ट, including Spicejet and including Indigo and everything. And I'll also give you my own example कि मैंने कैसे clear किया था, कैसे prepare किया था, and why is it so important. So we'll start with what exactly is psychometric testing. तो जैसे आप जानते हैं psychometric testing is nothing but a test of what your personality is. So उनको ये समझना है कि आप as a human being कैसे हैं आप, how do you think, how do you feel, how do you behave in the environment. Especially with around people and around circumstances, and how do you basically take decisions. So for that it's very important for them to know कि आप इवन अगर आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट कॉकपिट में आप कैसे बिहेव करेंगे इन प्रेशर सिचुएशंस, वो उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी है, right? So I think you might be aware in 2015 there was one German wings accident crash where all the passengers died unfortunately, and the reason was post investigation was a pilot error, and that was a pilot suicide. And when they investigated, they found that the pilot wasn't in the right mental condition to fly the plane. So his psychiatric or his psychomet or his I would say his psychiatric condition wasn't very great, and everybody missed that. So now psychometric tests have gained a lot of importance post that incident as well, right? So think of it, that all the airlines, they want to know, okay, who's the person who's sitting inside my cockpit, who's flying so many passengers, वो कौन है इंसान. अगर कल को कोई pressure situation आती है with the captain, or let's say, how do they work with the crew, work with the captain, does their personal situation affect their professional work ethic or their performance? That is something they all want to know very, very eagerly, right? So ये तो बात होती है कि personality, या फिर I would say the psychometric test, why is it so important for all the cadet programs. Now before I get into what exactly it is और कैसे prepare किया जाता है, I'll just try to bust some myths around this test. देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक एग्जाम है, ठीक है. इसमें बहुत लोग कहते हैं कि इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं होता, इसमें आपने जो आपका मन है लिख दीजिए, and that it is who that it is who you are. लेकिन ऐसा नहीं है. It's a proper exam. इसमें सही आंसर होते हैं, and if anybody tells you that इसमें सही या गलत आंसर नहीं होते हैं, just ignore them and just move away from that institute or that person who talks like that. इसमें सही आंसर बिल्कुल होते हैं because इसमें they want to know about various aspects of your personality, और उसके हिसाब से आपको questions दिए जाते हैं, right? And you have to answer those questions with the answers जो options दिए जाते हैं. Like in Spicejet, there were about I think 200 questions which I had to answer within 60 minutes. And to be honest, ये आपके within 20 minutes to half an hour खत्म हो जाएंगे आपको, क्योंकि इसमें इतना सोचना नहीं होता. You decide what you decide, right? The next myth is that I am who I am, so I'll answer what I answer. ऐसा नहीं है. They are expecting some sort of answers to those questions, and they have prepared a list of answers that they feel are the most correct ones to help this person clear this exam. तो अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि I'll answer who I am and I just want to portray my truthfulness, which is good, but एग्जाम में शायद आपको पास करने में हेल्प नहीं करेगा. क्योंकि देखिए, ये एग्जाम या ये जो टेस्ट है, ये दिस इज ऑल्सो एन एलिमिनेशन राउंड. ये सिलेक्शन टेस्ट नहीं है, राइट? जस्ट एज आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका टेक्नोलॉजी ये इंटरव्यू होता है, दैट्स अ सिलेक्शन टेस्ट, राइट? लेकिन आपका जो फर्स्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिटन एग्जाम, or let's say your CCT, the complex control task, these two are also elimination rounds along with the psychometric test. And the next step, which is the interview, that is where they start the selection process, because they want to make sure the people they're interviewing are the people that are very competent, and only for them they want to spend about 45 minutes to 1 hour. Okay? So these are the myths that I thought I should just make sure कि आपको ऐसा कोई गलतफहमी ना हो इस एग्जाम के बारे में. एग्जाम इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपके पहले दो हैं, which is written and complex control task, right? Now what exactly is the
एंड व्हाट्स अ पैटर्न एंड व्हाई एंड किसने और क्यों करते हैं. सो देखिए बेसिकली ये जो एग्जाम है ये आपके पर्सनालिटी टाइप्स को अनकवर करता है, राइट. So there was a Swiss psychiatrist called Carl Jung, who basically devised this test called Myers-Briggs exam. Now, what Myers-Briggs exam does is that it basically classifies you or your types of personality. जैसे कि आप extrovert हैं, introvert हैं, right? जैसे कि आप thinking हैं, perceiving हैं, आप thinking है या feeling है, for example, right? तो ऐसे बहुत सारे and maybe I'm wrong in terms of the I would say the categories, but there are lot many categories on which they categorize you on कि आपका type क्या है personality का. तो वो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रहता है जानने के लिए उनको कि आप what are you from inside as a human being, right? Now the point is that this exam you have to be very clear with what Myers Briggs is. That's one. So आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में. और सेकंड इज कि आपको सारे जितने उनके टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे. So this exam will require some amount of preparation, some amount of practice test. तभी जाके आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे. एंड लाइक आई सेड अर्लियर अगर नहीं करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है इस एग्जाम को पास करने के लिए, राइट. सो दे वांट टू नो, उनका मेन पर्पस ये है कि आप अगर लेट्स सपोज टेक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, वी ऑल वांट टू शो कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं, वी आर वेरी गुड एट टीम बिल्डिंग, वी लव टू इंटरैक्ट विद पीपल, लेकिन फॉर देम देयर वुड बी सम क्वेश्चन जहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इंट्रोवर्ट भी बन सकते हो जहाँ रिक्वायर्ड है, कि आप शांति से बैठ के वांट टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ. You're just not a person, who just wants to go out and have fun and meet people. You're also a person who wants to basically sit, quietly, and think, right? और let's suppose अगर आपका thinking या feeling आता है तो आपको दिखाना है कि आप decision making कैसे करते हैं. You're just not a person, who can be very intuitive. कि अच्छा, what I feel is I'll do this. ऐसा नहीं है. आपको दिखाना पड़ेगा कि आप decision making पे बहुत ही आप carefully होते हो, आप data analyze करते हो. And this is very critical to understand कि आप because they are trying to analyze कि आप cockpit में कैसे behave करने वाले हो, right? So let's suppose we take examples, let's say of the questions, right? So questions में, and it's a very funny exam, and I'll tell you why. Because questions बहुत ही generic होते हैं. So questions could be कि आप एक fruit कैसे खाओगे? आप fruit को आप as it is खाओगे या आप उसकी layers भी peel off करके खाओगे? Now you might feel, you'll say, मैं apple खाता हूँ every day. I just eat the apple the way it is. I don't need to peel off the layer, right? But you would be surprised to know they're trying to figure out that are you diligent enough to take the pain to peel off the skin and then have the apple? So are you that methodical? या फिर आप you always choose the easy way out? So like I said, it's a very complex exam in a way. You have to be very clear with what's the objective of taking the exam, right? So one more question could be, let's say for example कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करते हो. Now अगर आपने पहले एग्जाम दे रखा है और दोबारा सेम एग्जाम दे रहे हैं, so will you just let's say skim the surface, आप उसको बस जल्दी से दोबारा पढ़ेंगे या फिर उसको आप बहुत डीप जाके दोबारा से सिलेबस कवर करेंगे. Now the reason they're trying to figure out is कि कल को जब आप बैठेंगे कॉकपिट के अंदर, will you again let's suppose there are checklists, right, as a pilot. So every time you have to go through the same checklist again and again, right? So you can't say, what, I know everything on my back of my mind, I know, and I just, don't need to do this checklist. So they want to know कि आप थोड़े boring इंसान ऐसे हो कि आप हर बार checklist करोगे, and will you take that step to ensure the safety of passengers, or you will not do that? So these are questions that you have to be very careful about, right? So there are few tricks that you can deploy to clear this exam. Now the first trick which I employed and I think it worked fairly well for me was that आप ये सोचो कि हर एक क्वेश्चन का कॉकपिट से रिलेशन क्या है. लाइक आई सेड, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एप्पल वाला, आप सोचिए कि कॉकपिट में बैठ के इसका क्या रिलेशन हो सकता है. सो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि आप आर यू गोना टेक द इजी वे और द हार्ड वे. कल को अगर समथिंग हैपेंस इन द कॉकपिट, वेयर देयर इज सम इमरजेंसी, सो विल यू बी टेकिंग द इजी वे आउट ऑफ जस्ट डिसाइडिंग व्हाट टू डू, या फिर you will go through the whole checklist and then figure out, okay, what's the right thing to do, right? So these things are very important. You have to again correlate everything what is in the question to the cockpit. That's one. Now the second thing is that they will ask a lot of questions which are very similar. जैसे बहुत questions मुझे याद है मेरे टाइम पे आए थे कि टीम वर्क के ऊपर. Now you will think इसका सही आंसर वो होगा जो आपको दिखाता है कि आप टीम वर्क में आप करना चाहते हो. You are a team player.
लेकिन ऐसे 10 20 30 क्वेश्चन आएंगे, तो आप सोचो कि हर बार ये टीम प्लेयर के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज द रीजन इज बिकॉज उनका पर्पस ये जानना नहीं है। अगर आपने पहली 2-3 बार ये आंसर कर दिया कि यार टीम प्लेयर हैं, which is great, then you don't have to show them you're a team player. There might be some other motive of them to ask the question, which means that apart from team player, are you a person who can also think independently or not, right? कल को अगर let's say in the cockpit your co-pilot or your captain is incapacitated, तो आप can you take decisions on your own? Are you that capable enough? Are you dependent on other people to take decisions for yourself? So all these things are very important. I would suggest that always, buy some exams or tests from like Sky Test or anybody else. Pay the money, it's worth it. But आप practice करिए. आप practice करेंगे तभी clear होगा, वरना ये exam लोगों को लगता है बहुत simple है, लेकिन simple कभी नहीं होता है. So my recommendation is, like I said, prepare well, and I'm sure you will do well. It's not rocket science, but you have to get the trick of how to clear the exam, right? Any questions you have, feel free to put it in the comments. I'll be happy to answer about my experience as well. Also, you can view my earlier videos. My first video was basically around my own experience in clearing the Spicejet cadet program. The second was around what is the whole compass, कैसे होता है Spicejet का, मैंने उस पे वीडियो बनाया था. I hope that helps you. काफी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं अराउंड स्पाइसजेट के ऊपर कि ओके व्हाट शुड बी जॉइन स्पाइसजेट, शुड बी नॉट जॉइन स्पाइसजेट. My answers are very different because it depends on the circumstances. देखिए स्पाइसजेट इंडियन एयरलाइन, जो एयरलाइंस इन इंडिया हैं, उनका टाइम आई वुड से विद राइजिंग फ्यूल कॉस्ट, विद राइजिंग लॉट ऑफ थिंग्स, a lot of factors in play. So you have to be very careful in which program you decide to enroll if you clear the exam. So happy to answer any questions. I'll also put my email ID, and all the best, and thanks for watching.